Hi. So now let's do some of the numericals. Although जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो आपके assignment से थोड़े अलग होंगे, but these are the same numericals we've done before. So only thing we have to do is we have to figure out how or what is a budget line in intertemporal. क्योंकि अगर हमारे पास budget line है तो utility functions तो हमें पता ही है, या तो कॉप डगलस होगा, perfect substitute होगा, perfect complement होगा, quasi linear होगा, या फिर कोई और random function होगा जिसका analysis हमें करना आता है, like max or concave or neutral or any of those things. So the only thing we have to figure out is what a budget line is. Alright, so let's take a question. Let's say U is equal to C1, C2, consumption of, so this is C1, C2 are the two goods, which means this is a Cobb Douglas. हमारे को given है that rate of interest is 10%, M1 is 100 and M2 is 110. You're supposed to find out the equilibrium. And what happens when rate of interest increases to 20%? So, सबसे पहली चीज़ होती है बजट लाइन निकालना. बजट लाइन को हम प्रेजेंट वैल्यू से भी निकाल सकते हैं और फ्यूचर वैल्यू से भी निकाल सकते हैं. प्रेजेंट वैल्यू से अगर हम निकालें, then what do we have? We have C1 is equal to M1 plus M2 minus C2 is the amount that we would not be consuming in the future, which we can borrow from. या फिर हम क्या कर सकते हैं, we can say C2 is equal to M2 plus M1 minus C1 into 1 plus R. दोनों तरीकों से बजट लाइन सेम आती है. I want to prove this to you, so let's see. प्रेजेंट वैल्यू से निकाल रही हूँ पहले. 100 plus 110 minus C2, which is unknown, upon 1 plus R is 1.1. This is equal to C1. Can I write 1.1 C1 is equal to 110 plus 110 minus C2? This is 1.1 C1 plus C2 is equal to 220. तो ये मेरे पास बजट लाइन आई जब मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया. Let me use this here. C2 is equal to M2, right? C2 is equal to M2 plus M1 minus C1 into 1.1. That is C2 is equal to 110 plus 110 minus 1.1 C1. That is 1.1 C1 plus C2 is equal to 220. So चाहे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ या ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ, my budget line has come out to be the same. So then once I figure out my budget line, I know my function is this. Subject to the budget line is 1.1 C1 plus C2 is equal to 220. Then life is simple. आपको पता है ये कॉब डगलस है. Equilibrium condition is tangency. Tangency से आपको कैलकुलेट करना है, आप कर सकते हो. So that is C2 by C1 is equal to 1.1. So C2 is equal to 1.1 C1, right? So C2 is equal to 110. C1 is 110 upon 1.1, which is 100. So actually he's consuming on the endowment. He's consuming on the endowment. Second part, rate of interest increases to 20%, then what is going to happen? When rate of interest increases to 20%, budget line will change. Let's find out the new budget line. C1 is equal to M1 plus M2 minus C2 into divided by 1 plus R. So I'm using this one. या फिर I can say M2 C2 is equal to M2 plus M1 minus C1 into 1 plus R. So C2 is equal to 110 plus 120 minus 1.2 C1, or I can write 1.2 C1 plus C2 is equal to 230, right? So again, this is my utility function is this. So can I write C2 by C1 is equal to 1.2, which implies C2 is equal to 1.2 C1. So C2 is 115 and C1 is 115 upon 1.2, which comes out to be 95.83. Which comes out to be 95.83. So my C1 is 95.83 and C2 is 115. Right? So what happened? पहले मैं अपने endowment पे consume कर रही थी. अब I am a net lender. Right? अब यही function अगर आपका C1 C2 की जगह C1 plus C2 होता,
तो आपको पता है इट्स अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो आप कौन सी कंडीशन यूज़ करते हैं? आप कंडीशन यूज़ करते हैं MRS की। तो मेरी जो फर्स्ट बजट लाइन है वो क्या है? माई फर्स्ट बजट लाइन इज this one 1.1 C1 plus C2 is equal to 220. So 1.1 C1 plus C2 is equal to 220 and my second budget line is 1.2 C1 plus C2 is equal to 230. मैं दोनों में कैलकुलेट कर सकती हूँ. My MRS is 1 is less than 1.1, which means that you will consume good 2. When you're consuming good 2, then you're saying C2 is 220 in the first case and C2 is 230 in the second case, right? That is if my function was perfect substitute. If it was a min function of C1 comma C2, then what would you do? Then you know the equilibrium is at the kink. C1 is equal to C2. पहली budget line में थी 1.1 C1 plus C2 is equal to 220, right? So I can write C1 is equal to C2. So 2.1 C1 is equal to 220 is equal to 220. So C1 is equal to C2 is equal to 220 upon 2.1, whatever that comes out to be in the first case. In the second case, it would be 1.2 C1 plus C2 is equal to 230. So then it would be C1 plus C1 is equal to C2 is equal to 230 upon 2.2, whatever that answer comes out to be. So basically the idea is for you to figure out the budget line. एक बार ये budget line आती है तो आपको maximize करना है. यही same चीज़ हमने labor supply में भी बोली थी. It's the same thing. Now the only difference is कि अगर आपको inflation दिया होगा, let's suppose in this question inflation was given to us as 3%. Inflation was given to us as 3%. Then what would you do? Then instead of using 1 plus r, you will use 1 plus rho. 1 plus rho will be 1 upon 1.1 upon 1.03. तो आप क्या करते? आप यहाँ पे सब जगह पे R यूज करने की जगह रो यूज करते एंड देन यू वुड फाइंड आउट योर न्यू बजट लाइंस. और ऐसे ही अगर आपको टैक्स रेट दिया होता, लेट्स से टैक्स रेट वाज गिवन टू अस एज 20%, देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द थिंग एज 1 प्लस r, यू वुड यूज एट 1 माइनस t इंटू r. मतलब आपका r जो है वो 10% है ना, तो आप r को यूज करते, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करते एज 8%. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1.1 यू वुड हैव यूज्ड 1.08 इंस्टेड, क्योंकि आप रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करते हो. दैट इज द ओनली डिफरेंस एंड दिस आर द ओनली काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स. हम लोगों ने असाइनमेंट में थोड़े से तरह के न्यूमेरिकल्स और करे हैं, आपको प्लीज प्रैक्टिस करके फिर सॉल्व करना. सी द रीजन आई गिव यू एन असाइनमेंट टू प्रैक्टिस इज बिकॉज यू नो देन यू वुड नो कि अगर मुझे इतनी क्लैरिटी है तो इस तरह के क्वेश्चंस में एग्जाम में किस तरीके से हैंडल करूंगी. अगर आप वो असाइनमेंट अपने आप नहीं करोगे तो आपकी वो जो लर्निंग है वो ब्रिज नहीं होगी. एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्कोर ऑफ 8 और 8.5 एंड अ स्कोर ऑफ अ हायर वैल्यू. तो इसीलिए अगर आपको स्कोर अपना मैक्सिमाइज करना है तो आपको थोड़ा सा ये वाली मेहनत खुद करनी पड़ेगी, असाइनमेंट खुद सॉल्व करके देखनी पड़ेगी, सो दैट यू अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. Alright, so I'll see you in the next video, which is the solutions to the assignment video of intertemporal. Alright, thank you.